हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। दिस इज इंजीनियर इमरान अजीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन इरिगेशन इंजीनियरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 101 टू 110। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 10 वीडियो पार्ट्स इरिगेशन इंजीनियरिंग, जहां पे हमने 100 एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपने उन वीडियोस को लाइक किया है और उनसे अपनी लर्निंग इनहेंस की है। तो CivTech सिंप्लीफाइड एक प्लेटफॉर्म है जो इंजीनियर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने बनाया है और इसके ऊपर प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स के मुतालिक भी वीडियोस अवेलेबल हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच दोज वीडियोस एज वेल। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो स्पेशली उन इंजीनियर्स के लिए तैयार की गई है वो आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द गेट एग्जाम और SSC JE और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब, जहां पे फर्दर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि CivTech सिंप्लीफाइड फैमिली का हिस्सा बने, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स MCQs इन इरिगेशन इंजीनियरिंग में पार्ट 11 आज हम डिस्कस करेंगे। दिस पार्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर दोज इंजीनियर्स हु आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर SSC JE, RRB JE, UPSC, REPE, FPSC, PPSC और KPPSC exams in Pakistan, India, Bangladesh, or anywhere in the world where professional engineers are preparing themselves for the interviews or job tests. So let's proceed with the video. In question number 101, it says that the gap or margin of height between full supply level FSL and top of the bank is called option A freeboard, option B is dowel, option C is inspection roadway, option D is berm. So जो आपका FSL है या पानी का टॉप लेवल है किसी भी कैनाल के अंदर, उससे लेकर साथ जो बैंक है उसकी हाइट तक जो भी मार्जिन होता है उसको फ्री बोर्ड कहा जाता है। और ये फ्री बोर्ड नॉर्मली इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि अगर डिस्चार्ज बढ़ जाए और या कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए जहां पे आपने फ्लड को रोटेट करना है कैनाल्स की तरफ, फ्लड वाटर को दरिया से या बैराज से, तो आपके पास कुछ मार्जिन होना चाहिए कैनाल को मैक्सिमम फ्लो के ऊपर ले जाने के लिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 और 2, द बर्म्स when fully formed, option A reduce the absorption losses and prevents leakages, option B protect the bank from erosion because of wave action, and option C provide a scope for future widening of the channel or canal. So option D is all of the above. So D is the correct option. जो berm होते हैं, जो बंद होते हैं, जो नहर के या कैनाल के दोनों तरफ, वो अगर आपने कंपैक्शन अच्छी की है तो एब्जॉर्प्शन और लीकेजेस ऑफ कोर्स कम हो जाएंगे और इट प्रोटेक्ट्स द इरोजन। जो आपका वेव एक्शन होता है कैनाल के अंदर या चैनल के अंदर, उससे जो इरोजन होती है उसको प्रिवेंट करते हैं और अल्टीमेटली फ्यूचर में आपने अगर उसके ऊपर वाइडनिंग करनी है या रेजिंग करनी है तो उसके लिए भी एक बेस प्रोवाइड करते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? ऑप्शन ए, द टॉप ऑफ डावल इज केप्ट above the free supply level by a margin of freeboard. Option B, the dowels are provided as a measure of safety for automobiles driven on the service roads. Option C, the dowels act as curbs on the side of roadway towards the canal. Option D is none of these. So dowels इन तमाम purposes के लिए बनाए जाते हैं. So D is the correct option, which is none of these. So dowel क्या है? Dowel आपका जो कैनाल का अपना किनारा है वो, और जो रोडवे उसके साथ सर्विस रोड जिसके ऊपर गाड़ियां वगैरह चलती हैं, ऑटोमोबाइल्स या पेडेस्ट्रियन मूव कर रहे होते हैं, उसके दरमियान आपने कंक्रीट के या स्टोन मेसनरी के कुछ वॉल्स टाइप स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। सो इनको डावल कहा जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, व्हिच इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 104, द फ्री बोर्ड इन अ कैनाल or channel is governed by the option A, size of the canal, option B, location of the canal, option C, water surface in fluctuations, option D, all of these. So D is the correct answer for this question. The freeboard is in a channel is governed by size of the canal. Size of canal के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने freeboard कितना देना है। So location of the canal, canal की लोकेशन के ऊपर, and water surface fluctuations जो होती हैं उसके अंदर ड्रा डाउन वगैरह, सो उससे भी फ्री बोर्ड के ऊपर फ्री बोर्ड की प्रोविजन जो है डिपेंडेंट होती है। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 105, द बर्म्स प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ टू बैंक एंड thus make it safe against breaches. ऑप्शन ए इज ट्रू एंड ऑप्शन बी इज फॉल्स। यस, इट इज ट्रू। बर्म्स जो है वो एडिशनल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और ब्रीचेस के लिए एक सेफ्टी मेजर भी प्रोवाइड करते हैं जब आपने ओवरफ्लो या डिस्चार्ज आपका
आपका रेगुलर डिस्चार्ज से इमरजेंसी डेज में ज्यादा आता है, सो उसमें भी आपको एडिशनल स्टोरेज की फ्लो की कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं बर्म्स। So A is the correct answer for this question. Question number 106. The saturation gradient in an ordinary loam soil is option A 1:1, option B 2:1, option C 3:1, and option D 4:1. So D is the correct answer. The saturation gradient in an ordinary loam soil is 4:1. 107. The height of dowel above the road level should not be more than option A 10 centimeter, option B 20 centimeter, option C 30 centimeter, and option D 40 centimeters. So C is the correct option. The height of dowel above the road level should be maximum 30 centimeters. So C is the correct answer. 108. The width of dowel is usually kept from option A 0.1 meter to 0.3 meter, option B 0.3 meter to 0.6 meter, option C 0.6 meter to 0.9 meter, and option D 9 meter to 1.2 meter. So B here is the correct option. जो दावल होता है उसकी यूजुअली जो विड्थ होती है वो 0.3 मीटर टू 0.6 मीटर होती है। 109. The spoil bank is formed when the option A canal has steep bed slope, option B canal has section, option B canal section is too large, option C volume of excavation is in excess of the embankment filling, option D canal alignment is meandrous. So C is the correct option. Spoil bank is formed when the volume of excavation is in excess of embankment filling. C is the correct answer. 1110. The borrow pits should preferably be taken from option A the field on the right side of the canal, option B field on the left side of the canal, option C the central half width of the section of the canal, and option D any one of these. So C is the correct option. Borrow pits जो है वो एक्सकवेट की जाती है नॉर्मली सेंटर हाफ विड्थ ऑफ द कैनाल, सो दैट आप फिलिंग का जो आपका खर्चा है वो कम से कम हो जाए और वही मटेरियल आप सेंटर ऑफ द कैनाल से एक्सकवेट करके अपने बर्म्स के ऊपर यूज कर सकें। इसलिए सेंटर हाफ में आपने एक्सकवेशन करनी है बारो पिट्स। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, दिस वाज पार्ट 11 ऑफ आवर वीडियो सीरीज इन इरिगेशन इंजीनियरिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 10 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए। आई होप आपने इनसे लर्निंग डेवलप की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, जहां पे फर्दर 10 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आएंगे और वो भी काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके जॉब एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो इन वीडियोस को लाइक करें, अपनी कम्युनिटी में अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ वो शेयर करें और हमारे चैनल का हिस्सा बने बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। So let's meet again. Till then, thank you very much and have a good day.